different ICs. Okay, so we have started with 8257, then we have gone with 8255, then we have seen 8254. Now we are going to understand 8257. Okay, that is DMA controller. So today we'll be talking about 8257 DMA controller. It is DMA controller. Okay, DMA controller. So if possible, I will be taking today DAC also. So if you have seen the syllabus for your test 2, you have DAC. If time permits, I will take that one. Agar nahi ho pa raha hai, so I will be sharing 2 more videos in which in one video I will be explaining you about the DAC interfacing with 8086. DAC is what? Digital to analog converter, that is 0808 IC. As well as the last portion, that is 8087 coprocessor. Okay, 8087 coprocessor. So you have your exam that is microprocessor exam on 29th. Okay, so I will see that you will be getting 2 recordings. But yesterday I have already uploaded some of the PPTs related with the topic which I have covered and the topic which I will be covering. So meanwhile, you can just go through that and you can try to understand by yourself. And otherwise, I will be sharing 2 more videos in which I will be covering all the topics which are there in your test 2. Okay. So today I will be covering DMA controller, and if time permits, I will go with the DAC, digital to analog converter, and we have the IC 0808 and it's interfacing with 8086. Okay. So we'll start with 8254 DMA controller. Now in your syllabus, you have this DMA controller. About the DMA controller, already I have told you that I will be talking about the DMA controller in a separate topic. We have gone through this DMA controller word when I was dealing with you that how you can transfer the data. So data can be transferred in 2 ways. One by the interrupt. Okay, that is called as interrupt enabled data transfer. And the second one is the DMA controller by using the DMA controller. So we have already studied about the interrupt controlled data transfer. Today we will be seeing how the data is getting transferred through the DMA. DMA stands for direct memory access. So why it is called as a direct memory access? Everything we are going to understand now. So before I go with this 8257, again the same thing: the pin diagram, the functional diagram, the control word, and the different modes of operation. Okay, and the last one, interfacing of 8257 with your 8086. Okay, so the last part I will be giving you as a homework, where you will be actually seeing how this 8086 is interfaced with 8257. But today we are going to see the remaining 4 parts. Okay, so before I go with the understanding of 8257, let me explain you what is a DMA. What is a DMA? That is direct memory access. Okay, direct memory access. Now you see that here you have 8086. Now I am explaining you the concept of DMA. I am explaining you the concept of DMA. Now here you have 8086. Okay. Here you have memory. Here you have IO. So what is this? This is 8086. This is memory. This is your IO device. This is your IO device. And you are sharing the bus, the internal bus. You are sharing the internal bus. Now when I am saying the bus, this bus means what? This bus means what? This is address bus, this is a data bus, or it is the control bus. Okay, so all these 3 buses are there. So this is called as internal bus. This is internal bus. Sometimes it is also called as system bus. So this is also called as, hold together, this is also called as system bus. Now you see here, suppose I want to transfer the data between the memory and the IO device. Suppose I want to transmit the data between memory and IO device. So during this transfer, you cannot directly transfer the data, but it has to be with supervision of 8086.
That means 8086 has to play an important role while transferring the data between memory and IO device. Okay, so you can now, when I'm drawing this internal bus, this is also connected with this memory and the IO device. So here also I'm connecting. So whenever you want to transmit the data between memory and IO device, you have to take the participation, or you have to take the permission of 8086. That means 8086 is also taking part in the data transfer between the memory and IO device. Now, लेकिन इसमें क्या होता है? Actually, the processor is getting involved in the data transfer. Okay, so इसका अगर कुछ दूसरा काम है, that work it has to leave and it has to take part in the data transfer. So that's why the concept comes to be a DMA, that is direct memory access. So we want there should be a direct data transfer without the role of 8086, so that 8086 can do its own other duty. वो दूसरा कुछ काम कर सकता है instead of taking part in the data transfer. And that's why you have the controller which is called as a direct memory access controller. So there is one more controller. There is one more controller that is called as direct memory access controller. So DMA controller. So there is a DMA controller. There is a DMA controller. So this is a DMA controller along with some of the signals. Now, instead of the role of 8086, what DMA controller will do now? All of you pay attention. अभी DMA controller क्या करेगा? DMA controller will take the permission of 8086 and it will access the internal bus. जब internal की बस की बात कर रहा हूँ तो address bus, data bus और control bus. So I mean to say that DMA controller will take the access of the address, data and control bus, and it will see that the data would be transferred directly between the memory and the IO. So can I say now 8086 will not take a role in the data transfer, but who is going to take the role? DMA controller. So can I say now here DMA controller becomes the master of the internal bus only for the data transfer between the memory and the IO device. तो ऐसे केस में क्या होता है, जब DMA कंट्रोलर जब एक्सेस ले लेता है, कंट्रोल ले लेता है इंटरनल बस का, तो डायरेक्टली मेमोरी और IO डिवाइस में डेटा ट्रांसफर हम कर सकते हैं विदाउट द रोल ऑफ 8086, सो दैट 8086 कैन डू इट्स अदर वर्क. ये इसका बाकी का काम कर सकता है एंड इट विल नॉट इंटरफेयर इन द डेटा ट्रांसफर. ओके, सो this is a particular scenario in which actually your DMA controller is playing an important role. So we are going to see the specific DMA controller, that is 8257. एक दूसरा भी होता है, that is 8237. This is just for your knowledge. Okay, 8257 दूसरा भी DMA controller है, 8237. Okay, now we are going to see the role of DMA controller. To be more specific, 8257, we are going to see what are the different pins. Now this is 40 pin IC. We are going to see how the control of internal bus is taken by DMA controller. What are the signals which are taking part in the data transfer, and how the data is getting transferred between the memory and the IO. मैं जब data transfer की बात करता हूँ तो it is memory to IO or vice versa, IO device to memory. It can be of either. Okay, so this is the block diagram just to give you a feel of understanding what is a DMA controller, why it is called as direct memory access. Direct memory access means without the role of 8086. So direct memory access, ये memory को directly DMA control access करके data transfer कर सकता है. Okay, so that is why it is called as a direct memory access controller. And who is that controller? The specific name is 8257. 8257 is there in our syllabus. We have the other IC 8237 also. Okay, now this particular block diagram, in detail information we will be seeing now. Okay, so for that I will be sharing the screen and you just see the diagram for that. If the question is asked, you will be explaining with this
block diagram. Okay, now see the block diagram. See, meanwhile, if you have any questions, you please ask me. Okay, stop me and ask me. सर हाँ सर तो फिर वो टाइम जहाँ पे डीएमए कंट्रोलर मास्टर बन जाता है, वो टाइम 8086 कौन से स्टेट में रहेगा? वो उसका बाकी का काम करेगा, वो वेट स्टेट में नहीं रहेगा, वो उसका बाकी का जो भी काम है, इट कैन बी डूइंग सम अर्थमेटिक ऑपरेशंस, it will be doing its other duty. So that 8086 will not be involved in the transferring of the data between the memory and IO devices, क्योंकि इंटरनल बस का कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर ने लिया है, और डीएमए कंट्रोलर इंटरनल बस का कंट्रोल लेता है सिर्फ डेटा ट्रांसफर करने के लिए, बाकी कुछ काम के लिए नहीं। तो सो दैट 8086 का बाकी का जो भी कुछ काम है वो कर पाएंगे। ओके ओके सर। हाँ, yes, now we are going to see the block diagram in detail. Block diagram, yes, this is the block diagram. Now whatever I have explained you on the board, please try to correlate here now. Please try to correlate. I suppose this is clear now. Now see here, all of you pay attention. हमको पहले देखना है कि कौन कौन से ब्लॉक है। ये देखो, हमारे पास पहले एक ब्लॉक है 8086 का माइक्रो प्रोसेसर का, दूसरा ब्लॉक है मेमोरी का, तीसरा ब्लॉक है पेरिफेरल डिवाइस, दैट इज अ डिस्क कंट्रोलर. You can assume this block as IO device, and one more block that is a DMA controller. तो जो मैंने बोर्ड में बनाए थे वो सब यहाँ पे है, 8086 memory, IO device and DMA controller. Okay, now when along with this we need to see even the signals. Now as far as microprocessor signals are concerned, you are familiar with all the pins. उसमें से important pin है ये चीज, ये वन, तो जो मैं सर्कल कर रहा हूं वो ये इंपॉर्टेंट है. As far as data transfer is concerned, okay, all other pins are familiar to you. All other pins are familiar to you. देखो ये पिन इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाले भी पिन इंपॉर्टेंट है, तो जो जो मैं सर्कल कर रहा हूं वो पिन इंपॉर्टेंट है, ये वाले पिन इंपॉर्टेंट है. सो वी आर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस नाउ. और ये वाले पिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. यस, वो HRQ HLDA भी होगा ना? हाँ ये वाले भी, हाँ ठीक है, ये दिस इवन दिस. So whatever the circles I have made, these are the important pins. So I will be explaining you the working now. Okay, अभी मैं working आपको explain करूंगा. Now all of you pay attention. Now you assume that DMA controller is not there. You assume that DMA controller is not there, and in normal operation memory और IO devices में जो भी data transfer होगा वो microprocessor से होगा. तो can you see this switch now? ये switch A के पास है, इसका मतलब microprocessor involved है. ये स्विच भी ऊपर है यानी माइक्रो प्रोसेसर इन्वॉल्व है, ये स्विच भी ऊपर है, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर इन्वॉल्व है. तो एड्रेस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ये सिग्नल्स अलग अलग दिखाए. तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये तीनों भी बसेस के कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर के पास है. ओके, माइक्रो प्रोसेसर के पास है. अभी मुझे डेटा ट्रांसफर करना है मेमोरी और पेरिफेरल के बीच में, लेकिन विद द रोल ऑफ डीएमए कंट्रोलर, विद द रोल ऑफ डीएमए कंट्रोलर. तो जब डीएमए कंट्रोलर पिक्चर में आएगा तब ये जो स्विचेस है जो पहले ए पे थे वो अभी बी पे जाएंगे, वो सब बी पे जाएंगे, वो सब बी पे जाएंगे. बी पे गए, इसका मतलब एड्रेस, डेटा बस और कंट्रोल बस का जो भी एक्सेस है वो अभी डीएमए कंट्रोलर के थ्रू जाएगा, वो डीएमए कंट्रोलर के थ्रू जाएगा. इसलिए माइक्रो प्रोसेसर विल बी removed from the data transfer role and it can perform its other duty. So actually ये कैसे हो रहा है now ये समझो अभी. I will explain you one by one, all of you listen properly. Now the DMA controller is playing an active role in the data transfer between the memory and peripheral device. वो कैसे हो रहा है, वो सीक्वेंस देखो क्या हो रहा है. सीक्वेंस ऐसा होता है कि पहले IO डिवाइस एक सिग्नल भेजता है, वो सिग्नल होता है DREQ. DREQ, DREQ stands for data request. Data request. DREQ stands for data request.
तो आईओ डिवाइस बोलता है कि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, तो इट इज रिक्वेस्टिंग द डीएमए कंट्रोलर टू ग्रांट मी द परमिशन टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द मेमोरी एंड द आईओ डिवाइस। तो जब डीआरईक्यू डीएमए कंट्रोलर के पास जाता है, तो डीआरईक्यू आने के बाद तुरंत डीएमए कंट्रोलर क्या करता है, एचआरक्यू भेजता है माइक्रो कंट्रोलर को। अब ये सिनारियो कब है, जब माइक्रो कंट्रोलर के पास सब बसेस का कंट्रोल है, यानी ये सब स्विचेस ऊपर है, ये सब स्विचेस ऊपर है। तो ऊपर से नीचे स्विच लाने के लिए ये सीक्वेंस है, पहला सीक्वेंस है DRQ, दैट इज डेटा रिक्वेस्ट by the IO device to the DMA controller. In response to the DREQ, DMA controller will send HRQ, that is hold request. Hold request, that means आपको ये सब पता है, ये HRQ signal is of DMA controller and hold signal is of microcontroller, microprocessor 8086. So HRQ and hold are connected with each other. So that is DMA controller is requesting to hold the microprocessor and wants to take the control of the different buses. तो इसलिए वो DRQ के अगेंस्ट में HRQ भेज रहा है माइक्रोप्रोसेसर को। तो होल्ड और HRQ आर कनेक्टेड। ये होने के बाद माइक्रोप्रोसेसर को पता चल जाता है कि डीएमए ने रिक्वेस्ट भेजा है, तो होल्ड करने के बाद तो माइक्रोप्रोसेसर विल होल्ड एंड विल गिव द एक्नॉलेजमेंट। सो कैन यू सी देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट नाउ, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। तो होल्ड आने के बाद होल्ड एक्नॉलेजमेंट जाता है डीएमए कंट्रोलर के होल्ड एक्नॉलेजमेंट को। सो HLDA, इसका भी HLDA और इसका भी HLDA कनेक्टेड है। सो एक्नॉलेजमेंट इज गिवन from the microprocessor to the DMA controller. Now, तो acknowledgement आता है, तो microprocessor will leave the all the buses, यानी it will leave the control of all the buses and will ask the DMA controller to gain the access of the different buses. तो ये जब होल्ड आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, तुरंत डीएमए कंट्रोलर ये DREQ का जो रिक्वेस्ट था उसको एक्नॉलेज करता है, तो वो फिर से और एक सिग्नल भेजता है। तो दैट इज DACK, दैट इज डेटा एक्नॉलेजमेंट। डेटा ये जीरो का क्या मतलब है, जब मैं पिन कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा तब बताऊंगा। तो DRE के अगेंस्ट में HRQ, HRQ के अगेंस्ट में HLDA, HLDA के अगेंस्ट में DACK, दैट इज डेटा एक्नॉलेजमेंट। तो ये जब एक्नॉलेजमेंट जाता है तो आईओ डिवाइस कैन डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उसके पहले ये बसेस के कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर के पास आ जाते हैं। तो ये जो स्विच है नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब डीएमए कंट्रोलर अभी एड्रेस, डेटा बस और कंट्रोल बस कंट्रोल आ गया डीएमए कंट्रोलर में। देन कैन यू सी हियर दीज लाइंस आर कनेक्टेड नाउ। डेटा बस, पेरिफेरल का डेटा बस डायरेक्ट कनेक्ट किया है और कंट्रोल बसेस वो भी डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है। ओके, नाउ what is going to happen, now the data will be directly transferred between the memory and the IO device through the data bus, also the control signals. now यहाँ पे important control signals क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है। IOR बार अगर मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइस को रीड करना है, IOW बार अगर मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइस को राइट करना है, MEMR बार यानी मुझे मेमोरी को रीड करना है, MEMW बार यानी अगर मुझे मेमोरी को राइट करना है। सो ऑल दीज कंट्रोल सिग्नल्स आर आल्सो टेकिंग पार्ट। अभी मुझे और एक बात बतानी इंपॉर्टेंट, अगर मुझे मेमोरी से डेटा आईओ डिवाइस में ट्रांसफर करना है तो एक्चुअली ये दो स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है मेमोरी रीड और आईओ राइट, मेमोरी रीड आईओ राइट। और अगर डेटा आईओ डिवाइस से मेमोरी में ट्रांसफर करना है तो वहां पे होता है आईओ रीड और मेमोरी राइट, आईओ रीड एंड मेमोरी राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर बोथ विच टू सिग्नल्स आर गोइंग टुगेदर, मेमोरी रीड आईओ राइट और बाद में आईओ रीड एंड मेमोरी राइट। सो ऑल these four signals are important. These are the control signals actually. मुझे कहाँ से कहाँ डाटा ट्रांसफर करना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल एक्टिव दोज कंट्रोल सिग्नल्स एंड सी ऑल द कंट्रोल सिग्नल्स आर एक्टिव लो, इसलिए सबके ऊपर बार है, सबके ऊपर बार है। ओके,
So I hope you have understood the concept of DMA controller and how this DMA controller is taking part and how it is going to control the access of all the buses and how the IO and memory are directly getting transferring the data between them, and which are the signals which are taking part: DREQ, DACQ, DACK, HRQ, HLDA, HLDA, HOLD. तो ये सब सिग्नल्स आपको याद रखना. ओके सर एक तो क्वेश्चन है. हाँ सर अगर हम लोग जो डीएमए कंट्रोलर है उससे सिर्फ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो सर हम लोग तीनों बसेस का कंट्रोल क्यों लेते हैं? मतलब तीनों बसेस का कंट्रोल लेना पड़ता है. तीनों बसेस का कंट्रोल लेना पड़ता है बिकॉज एड्रेस बस मुझे बताता है कि मेमोरी के कौन से एड्रेस से मुझे डेटा ट्रांसफर करना है. डेटा बस का काम होता है कि वो डेटा बस के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा, उसके ऊपर डेटा ट्रांसफर होगा. और कंट्रोल बस का काम होता है कि एक्चुअली मुझे मेमोरी रीड करना है, मेमोरी राइट करना है, आईओ रीड करना है या आईओ राइट करना है. तो इसलिए ये तीनों की इंपॉर्टेंस है. एड्रेस बेस बताता है कि कौन से एड्रेस लोकेशन, और ये एड्रेस बस ये भी बताता है कि आईओ डिवाइस के कौन से लोकेशन पे डेटा ट्रांसफर करना है या फिर कहाँ से डेटा ट्रांसफर करना है मेमोरी को. और डेटा बस के ऊपर एक्चुअली डेटा ट्रांसफर होता है. और कंट्रोल बस बताता है कि ये IOR, IOW, MEMR बार, MEMW बार. तो तीनों भी बसेस के कंट्रोल होने जरूरी है. किसी दो से बसेस से कंट्रोल लेने से काम नहीं होता. अंडरस्टूड? हाँ सर. सर मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है सर, उस वो तो फिर सर हॉल्ट स्टेट में चले जाएगा ना, बिकॉज उसके नहीं बाद नहीं, आपका इंटरनल बस बहुत बड़ा होता है. इंटरनल बस में सिर्फ हम कुछ इंटरनल बस से हम कुछ बसेस यूज कर रहे हैं फॉर डेटा ट्रांसफर. लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का बाकी का जो भी कुछ काम है जिसमें उसको एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस भी अगर उसको यूज करना है तो वो यूज कर सकता है. सिर्फ डीएमए कंट्रोलर डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड आईओ डिवाइस के लिए ही उसका कंट्रोल का एक्सेस कर रहा है. डीएमए का सिर्फ एक ही काम होता है कि मेमोरी और आईओ डिवाइस में डेटा डायरेक्टली ट्रांसफर करना. लेकिन इसका मतलब नहीं कि माइक्रो प्रोसेसर वो बसेस यूज नहीं कर सकता है. वो कर सकता है उसके बाकी काम के लिए. सो दैट माइक्रो प्रोसेसर विल बी not engaged in the data transfer between memory and IO device. It can do its other work and can, if required, can use the buses. Okay. ओके सर. समझा सर. Okay. So this is the block diagram. With this block diagram, we will move further to understand the pin configuration. Yes, this is the pin configuration. अब जो मैंने आपको पढ़ाया था, everything is available here. See, IOW, IOR, IOW. See, it is a 40 pin. It is a 40 pin. So we'll have a fast review of this. MEMR, MEMW, mark. Mark is nothing but it is modulo 128 mark. Okay. So this is not so important. So I'm not going to explain you mark. What is mark? Ready. Now this ready is, what is this ready? Okay. So ready pin is mostly it is used whenever it is actually in the normal timing operation, it is connected to the VCC. Okay. But when ready input is tied low, यानी अगर हम उसको 0 बनाते हैं तो 8257 enters in a wait state. 8257 goes into wait state. अभी wait state में क्यों जाता है वो? Only because अगर IO डिवाइस और मेमोरी का जो स्पीड है डेटा ट्रांसफर का, अगर दोनों में से भी किसका स्पीड अगर स्लो है तो फॉर दैट because of there is no compatibility between the memory and the IO. कंपेटिबिलिटी ने इसका मतलब क्या है? एक डिवाइस फास्ट है और दूसरा स्लो है और डेटा ट्रांसफर को फिर ऐसे टाइम पे ट्रांसफर करने को टाइम लगता है. सो बिकॉज ऑफ दैट your 8257 has to wait. So it goes into wait state when your ready pin becomes 0. And when your ready pin becomes 0, कब होता है ये? When this is used to get extra time in DMA machine cycle to transfer data between slow memory and IO devices. Between slow memory and IO devices. Because of this condition, your ready pin goes 0. Otherwise,
अगर सब बराबर है, so this pin will be always high. So this will be tied to VCC. This will be tied to VCC. So this is about the ready pin. HLDA मैंने बताया है. This is ADSTB. This is called as address strobe output signal. This is called as address strobe output signal, and it is used to latch the high byte memory address issued through D0 to D7 lines by 827 during the DMA mode into an external latch. Now, address strobe is the output signal which is used to latch the high byte of memory address issued through D0 to D7. आपको पता है मल्टीप्लेक्स है आपका 8086 का डेटा और डेटा लाइंस और एड्रेस लाइंस आर मल्टीप्लेक्स. ओके, और अगर हायर बाइट ऑफ मेमोरी एड्रेस मुझे अगर यूज करना है, सो दैट विल बी इशूड थ्रू D0 to D7. So in that case D0 to D7 will be used as an address pin. Okay, so in that case अगर मुझे हायर बाइट ऑफ मेमोरी एड्रेस इशू करना है through D0 to D7, then that particular address is latched. Latch means stored. That is stored. Okay, into the external latch. So for that, this ADSTB, that is address strobe, this is output signal. This is an output signal. Okay, this is an output signal. So when you will go through this, जब आप read करोगे different pins, okay, then that time you will be able to understand. But just for time being, understand that higher byte of address bin address is latched into the external latch by using this ADSTB. Okay, then comes address enable. Address enable you are familiar with. This is also output signal. It is used to enable the address latch connected to D0 to D7 pins of 8257. आपके 8257 को डेटा पिंस कितने हैं? ओनली 7 है. ओके, ये देखो D0 से D4 और D5 से D6 और D7. Only 8 pins are there. Okay, only 8 pins are there. So address enable output signal is used to enable the address latch connected to D7 to D0 pins of 8257. Okay, then the next one is HRQ. आपको पता है. CS bar chip select आपको पता है. Clock, this is the input clock. Reset, अगर मुझे reset करना है, okay, if I want to reset 8257, so I can use this reset pin. DACK2, DACK3. Okay, actually you have acknowledgement, that is data acknowledgement. How many data acknowledgement you have? You have 4. You will be able to see where DACK or the remaining is here. Yes, DACK0, DACK1. Okay, so to explain you this, I'll be showing you the functional block diagram. I will be showing you the functional block diagram. So please see the functional block diagram.
Yes. See here now, all of you. Now this is a functional block diagram. Now your 8257 supports 4 channels: channel 0, channel 1, channel 2, and channel 3. See, this is the internal functional block diagram of 8257. Okay, 8257 functional block diagram. Your 8257 supports 4 channels: channel 0, channel 1, channel 2, channel 3. इसका मतलब है you can connect 4 IO devices. You can connect 4 IO devices. एक IO device यहाँ पे लगेगा, एक IO device यहाँ पे लगेगा, एक IO device यहाँ पे लगेगा, एक IO device यहाँ पे लगेगा. तो 4 IO device के लिए 4 signals, हर एक IO device के लिए 2 signals. Can you see a DRQ0? That is a data request. You remember मैंने block diagram में बताया था. So every IO device will send the DRQ signal. That is a data request. और it is connected to channel 0, इसलिए DRQ0. और उसके अगेंस्ट में डेटा एक्नॉलेजमेंट DACK. ये 0 का मतलब है it is connected with channel 0. And remember, this is active high and this is active low. This is active high and this is active low. Similarly, for channel 1, DRQ1, channel 1, DACK1 bar. Here also DRQ2, DACK2 bar, DRQ3, DACK3 bar. Okay, so 4 IO devices I can connect. 4 IO devices I can connect. Okay, this is my internal bus. I am talking about the functional block diagram of 8257. Okay, तो इसलिए वो ये है. Okay, तो आपके ये जो इनपुट और आउटपुट पिन है वो IO device से connected है. Okay, that is connected with IO device. Okay, so this is what I was actually trying to explain you. Okay, तो ये मैं जो बता रहा था आपको, so that is here. Okay, that is here. So I have told you ये जो important है, उसके अगेंस्ट में you have yes, उसके अगेंस्ट में you have DRQ3, DRQ2. तो ये जो है this one, DRQ3, DRQ2, DRQ1, DRQ0. ठीक है ना. तो जितने रिक्वेस्ट उतना एक्नॉलेजमेंट. देन ग्राउंड, देन डेटा ऑलरेडी मैंने बताया, देन VCC, देन एड्रेस A0 से लेके A7, A0 से लेके A7. और ये भी एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ टर्मिनल काउंट. ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ टर्मिनल काउंट. टर्मिनल काउंट हमने पढ़ा था अभी रिसेंटली इन 8254. टर्मिनल काउंट मीन्स जब आपका काउंटर डिक्रीमेंट हो रहा है वो 0 तक पहुंच गया. जब 0 है दैट मीन्स इट इज अ टर्मिनल काउंट, इट गोज टू 0. ओके, तो ये टर्मिनल काउंट भी यहाँ पे क्यों है, दैट थिंग वी विल सी. ओके, टर्मिनल काउंट भी यहाँ पे क्यों है, दैट थिंग वी विल सी. So before I proceed further, please read out this thing. I have already shared this. Okay, already I have shared this. Okay, now let me explain you the functional block diagram जो मैंने अभी ओपन किया था. Yes, this one. Okay, तो जो मैंने अभी पिंस बताई आपको. So functional block diagram में क्या क्या चीजें है, डेटा बस बफर है, रीड राइट लॉजिक है. डेटा बस बफर में आपका D0 to D7 है. रीड राइट लॉजिक में आपका IOR बार, IOW बार, क्लॉक, रीसेट, A0, A1, A2, A3. ये एक बात याद रखना, A0, A1, A2, A3 ये बायडायरेक्शनल पिन है. एड्रेस बायडायरेक्शनल है. और ये A1, A2, A3, A0, A1, A2, A3 और बाद में A4, A5, A6, A7 ये है आपका आउटपुट पिन. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों बायडायरेक्शनल और ये सिर्फ आउटपुट. ओके, तो वो देखेंगे हम उसका क्या सिग्निफिकेंस है. रेडी पिन, सो दिस इज व्हाट ब्लॉक, दिस इज अ कंट्रोल लॉजिक एंड मोड सेट रजिस्टर. कंट्रोल लॉजिक एंड मोड सेट रजिस्टर. ओके, तो वहाँ पे रेडी, HRQ, HLD है, बाकी के सब यहाँ पे है, बाकी के मैंने यहाँ पे बताया. और ये सब कनेक्टेड है. नाउ दैट इज नॉट विजिबल. दिस इज द लास्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी रिजॉल्वर. ये भी प्रायोरिटी रिजॉल्वर, इसका क्या मतलब होता है कि मैंने यहाँ पर 4 IO डिवाइस लगाए, लेकिन किसको पहले प्रायोरिटी देना है, किसको सेकंड देना है, किसको थर्ड देना है, किसको फोर्थ देना है, ये सॉल्व करता है ये ब्लॉक. ये ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा नहीं, लेकिन ये ब्लॉक का नाम है प्रायोरिटी रिजॉल्वर.
priority resolver. Okay, so I will be sharing this slide also. Okay, so this is a functional block diagram of 8257. Okay, after that, ये होने के बाद there is one more concept, that is of address. Yes, see here, internal address. ये जो आपको मैंने बताया था ना bidirectional, मैंने आपको जो बताया था bidirectional. Okay, see here now, A0, A1, A2, A3. अगर ये चारों भी 0 है, that means channel 0 is selected and address register. So I will explain you what are the different internal addresses. तो channel 0 का जो internal address है, DMA internal address register, that will be selected. Okay, and if it is 0001, then channel 0 का count register, channel 0 का count register. Okay, channel 0 का count register. So what is address, what is count, what is address register, what is count register, that thing I will explain you now. Okay, what is address register and count register. Similarly, count channel 1 के लिए वही है, channel 2 के लिए वही है, channel 3 के लिए वही है. ये बाकी के दो important है. अगर 1000 है तो mode set register, that is only for writing, write only, or status register, this is only to read, this is only to read. Okay, only to read. So if I ask you how many registers are there are actually 4 registers. Number 1, address register. Number 2, count register. Number 3, mode set register. And number 4, status register. Mode set register is for writing. Status register is to read, because I am going to read the status of the channel. Okay. And in this count and address register, depending upon what addresses you have selected, you will be selecting the respective address or count registers of the respective channels. Okay, so this is internal address of 8257. Internal address of 8257 register. Okay, sir. Yes. वो स्टेटस रजिस्टर है, उसके आगे 1001 होगा या फिर सर 1000 ही होगा? हाँ, ये मैं बताता हूँ, ये 100 ही रहेगा, लेकिन सिर्फ डिफरेंस है कि अगर मुझे रीड करना है, राइट करना है, लेकिन वो क्या बेसिस पे होता है, दैट थिंग आई विल एक्सप्लेन. ओके, ये 100 ही बराबर है, सिर्फ राइट करने के लिए मोड सेट ही होता है और रीड करने के लिए स्टेटस रजिस्टर होता है. मैं यही एड्रेस यूज करके मैं राइट कर सकता हूँ, तो मैं जो राइट कर रहा हूँ तो वो मोड सेट ही राइट कर रहा हूँ, और यही एड्रेस यूज करके मैं सिर्फ रीड कर सकता हूँ, तो मैं क्या रीड करूंगा, स्टेटस रजिस्टर ही रीड कर पाऊंगा. So that is the meaning. Okay, so I will now start with the explaining of yes, before that just write down, all of you write down. Please write down, all of you. Then I will explain about the address, count, and the status, and this one, mode. Please write down. Each channel has two each channel, jaldi jaldi likho. Each channel has two programmable 16-bit register. अगर आपने वो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम देखा होगा, तो हर एक चैनल को का साइज क्या है, each channel is having 16-bit of address and 16-bit of count register. तो आपने क्या लिखा, each channel has two programmable 16-bit registers. Two programmable 16-bit registers. Full stop. One register is used to program the starting address of the memory location. Jaldi jaldi likho. One register is used to program the starting address of the memory location for DMA data transfer. And another register ब्रैकेट में लिखो काउंट रजिस्टर, एंड अनदर रजिस्टर काउंट रजिस्टर, ब्रैकेट में लिखो काउंट रजिस्टर. और आपने जो ये सेंटेंस स्टार्ट किया था ना, वन रजिस्टर इज यूज टू प्रोग्राम द स्टार्टिंग एड्रेस, तो एक काम करो, वन रजिस्टर ब्रैकेट में लिखो एड्रेस रजिस्टर. वो जो रजिस्टर है वो एड्रेस रजिस्टर है. तो आपने क्या लिखा, वन रजिस्टर ब्रैकेट में एड्रेस रजिस्टर,
is used to program the starting address of the memory location for DMA data transfer, and another register bracket में लिखो count register is used to program a 14-bit count value is used to program a 14-bit count value and a 2-bit code and a 2-bit code for the type of DMA transfer and a 2-bit and a 2-bit bit and a 2-bit code for the type of DMA transfer. For a type of DMA transfer, कौन से ट्रांसफर ब्रैकेट में लिखो रीड और राइट और वेरीफाई ट्रांसफर. फिर से मैं बता रहा हूँ ब्रैकेट में क्या लिखना है, रीड और राइट और वेरीफाई ट्रांसफर और वेरीफाई ट्रांसफर. फुल स्टॉप ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप. The address in the address register is automatically incremented after every read or write or verify transfer. Read or write or verify transfer. Or verify transfer. Yes, see here now. Pay attention, all of you. आपने जब फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम देखा था, सपोज यहाँ पे चैनल 0 है और 16 बिट वहां पे लिखा था 16 बिट एड्रेस एंड काउंट रजिस्टर, ऐसा था. तो हर एक चैनल, टोटल 4 चैनल है, तो हर एक चैनल को 16 बिट एड्रेस रजिस्टर है और 16 बिट काउंट रजिस्टर है. तो 16 बिट एड्रेस क्या काम है, वो बताता है कि ये सपोज आपकी मेमोरी है, दिस इज योर मेमोरी, ये आपकी मेमोरी है और आपको डेटा ट्रांसफर करना है, लेकिन कौन से एड्रेस से डेटा ट्रांसफर करना है वो कौन बताता है, that is there in the 16-bit address register. Okay, suppose आपको यहाँ से डेटा ट्रांसफर करना है. ओके, सो आपका ये जो एड्रेस है that will be available in the 16-bit address register. एंड जब डेटा ट्रांसफर होगा तो पहले ये डेटा ट्रांसफर होगा, बाद में दूसरे एड्रेस पे ये डेटा ट्रांसफर होगा, बाद में ये एड्रेस पे ये डेटा ट्रांसफर होगा. सो ये जो एड्रेस लोकेशन है दैट विल बी इंक्रीमेंटेड आफ्टर एवरी डेटा ट्रांसफर. उसका क्या मतलब होता है, ये डेटा ट्रांसफर हो गया, एड्रेस इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ गया, फिर ये डेटा ट्रांसफर हो गया, बाद में एड्रेस इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ गया, फिर ये डेटा ट्रांसफर हो गया, बाद में ये एड्रेस इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ गया, फिर ये डेटा ट्रांसफर हो गया, एंड दिस विल गो ऑन. जितना मुझे डेटा ट्रांसफर करना है उतना मैं डेटा ट्रांसफर करूंगा. सो दिस काउंट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द काउंट रजिस्टर. अब उसमें भी क्या होता है, पूरा 16 बिट जो काउंट रजिस्टर की वैल्यू है उसमें से 14 बिट कुछ दूसरे काम के लिए यूज होता है और 2 वाले है जो दूसरे 2 बिट है वो दूसरे काम के लिए होता है. आपने क्या लिखा, 14 बिट काउंट वैल्यू. तो ये जो 14 बिट है दैट इज यूज फॉर काउंट वैल्यू. काउंट वैल्यू बोले तो 1 2 3 4 5. सो दैट काउंट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द 14 बिट. और ये बाकी के जो 2 बिट है वो क्यों यूज होते हैं, वो यूज होते हैं आप डीएमए में अगर राइट कर रहे हो या फिर रीड कर रहे हो या फिर वेरीफाई ट्रांसफर कर रहे हो. वेरीफाई यानी ट्रांसफर हुआ क्या नहीं वो वेरीफाई करने के लिए देयर इज वन मोड. सो दिस 2 बिट्स आर यूज्ड टू नो whether you have done the read or you have done the write or you have done the verify. तो वही आपने लिखा. आपने क्या लिखा है, DMA data transfer and another register that is count register is used to program a 14-bit count value and a 2-bit code
फॉर द टाइप ऑफ डीएमए ट्रांसफर। आपका डीएमए ट्रांसफर कौन से टाइप का है? आपका डीएमए ट्रांसफर रीड टाइप का है, आपका डीएमए ट्रांसफर राइट टाइप का है, या वेरीफाई करना, वेरीफाई इन द सेंस whether the data has been transferred or not, to verify that. So for that 2 bits are used and the 4 bits are used for actually the count. So that is the meaning of this. And to understand this, you have what? You have the I will show you that. You have the word for you have a control word for that. You have a control word for that. Okay, तो मैं बताता हूँ what is that control word. Are you able to see my screen? स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। हाँ, अभी यहाँ पे देखो क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको. Please see here now. Yes, ये देखो क्या लिखा है? फॉर्मेट ऑफ काउंट टू बी लोडेड इन द काउंट रजिस्टर ऑफ 8257. ये देखो 14 बिट काउंट वैल्यू और रिमेनिंग दो बिट है, दैट इज फॉर अगर 00 है तो वेरीफाई ट्रांसफर, अगर 01 है तो राइट ट्रांसफर, अगर 10 है तो रीड ट्रांसफर, अगर 11 है तो दैट इज इलीजिबल, दैट इज इलॉजिकल. ओके, तो 11 हम यूज नहीं करेंगे, हम 000110 यूज करेंगे. वेरीफाई ट्रांसफर, रीड ट्रांसफर, राइट ट्रांसफर. और एक्चुअली जो काउंट वैल्यू है वो देखो यहाँ पे. तो जो पूरा टोटल 16 बिट है उसमें से B0, B1, B2 डॉट 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 till what it is B14 and B15 and 16 are used to as a these 2 bits are used as a code to know what is a type of DMA, what is a DMA operation, verify, read or write. Okay, so this is a 14 bit. उसके नीचे अगर हम जाते हैं so here you will be able to see. ठीक है, this thing we will see afterwards. Okay, this thing we will see afterwards. So have you understood now? मैंने आपको अभी प्रोग्राम में ये बता दिया what is the address register and what is the count register. Now we'll be writing down about the mode set register. So for this mode set register मैं ऐसे रखता हूँ. Are you able to see my whiteboard also? Are you able to see my whiteboard also? Yes sir. हाँ, ठीक है. So I hope you have understood the address register का क्या काम है और count register का क्या काम है. अभी मेरे सिर्फ 2 बाकी है, so please write down for the remaining 2. Write down first. Write down the mode set register. आपको पता है mode set register कैसा होता, कहाँ से होता है? जब आपका एड्रेस है 1000 और मोड सेट रजिस्टर सिर्फ लिखने के लिए, फॉर राइटिंग नॉट फॉर रीडिंग. ओके, सो प्लीज राइट डाउन फॉर द मोड सेट रजिस्टर. द मोड सेट रजिस्टर इज यूज्ड टू प्रोग्राम various features of 8257 is used to program various features of 8257 is used to program various features of 8257 and the status register can be read to know the terminal count status of the channel. Register can be read to know the terminal count status of the channel. To know the terminal count status of the channel. Write down further. The mode set register is used to program the following features of 8257. The mode set register is used to program the following features of 8257 and write down this fast. Number 1,
enable or disable a channel. Number 2, fixed or rotating priority. Number 3, stop DMA on terminal count. Number 4, extended / normal write time. And number 5, auto reloading of channel 2. Auto reloading of channel 2. Auto reloading of channel 2. Okay. Yes. Now, all of you pay attention now. All of you pay attention on the screen. So, I am going to explain you about the format of controller to be loaded in the mode set register of 8257. मैंने बताया था mode set register का काम है to program the following features of 8257. मुझे अलग अलग features अगर 8257 का अगर implement करना है तो मैंने यहाँ पे features लिख के दिए. अब यही features you can see here now. See the bit B0 enable channel 0. अगर 1 है तो enable channel 0, अगर 0 है तो disable channel 0. Okay, तो कहने से number 1 is achieved. Enable, disable a channel. Yes. Fixed rotating priority, वो उसके लिए you have this RP. RP stands for rotating priority. अगर ये bit 1 है तो rotating priority, अगर ये bit 0 है तो fixed priority. इसका मतलब क्या, मैंने पहले बताया था, मेरे पास 4 चैनल्स है, 0, 1, 2, 3. चारों चैनल्स पे IO डिवाइसेस लगा है. तो पहले कौन सा डेटा ट्रांसफर करना है, बाद में कौन सा करना है, रोटेटिंग में रखना है या फिर फिक्स रखना है, वो सब मैं कर सकता हूँ ये बिट के ऊपर, बिकॉज इट इज अ प्रोग्रामेबल बिट. अगर ये 1 रखा तो रोटेटिंग होगा, अगर 0 रखूंगा तो फिक्स होगा. तो ये मैंने सेकंड भी अचीव किया. सो आई एम एक्सप्लेनिंग द फीचर्स बाय यूजिंग द कंट्रोल वर्ड ऑफ मोड सेट रजिस्टर ऑफ 8257. ओके. बाद में क्या है, स्टॉप डीएमए ऑन टर्मिनल काउंट. सो फॉर दैट कैन यू सी अस, that is bit number TCS. TCS stands for the terminal count. Okay, so stop DMA on terminal count. अब इसका मतलब क्या होता है, all of you pay attention. अगर मैंने काउंट वैल्यू 10 रखी, इसका मतलब आपका काउंट वैल्यू 10 से फिर 9 से 8 से ऐसा होगा. इसका क्या मतलब है, अगर मुझे अगर ये मेमोरी है और ये मेमोरी में सपोज 10 लोकेशन से मुझे डेटा ट्रांसफर करना है आईओ डिवाइस में, ये मेरा आईओ डिवाइस, ये मेरा मेमोरी, और 10 लोकेशन से डेटा ट्रांसफर करना है, तो मुझे पता है कि 10 लोकेशन से डेटा ट्रांसफर करना है, तो मैं काउंट वैल्यू क्या रखूंगा, 10 रखूंगा. तो जब 10 है तो पहला ट्रांसफर, 10 का 9 हो गया सेकंड ट्रांसफर, 9 का 8 हो गया थर्ड ट्रांसफर, 7 का 8 हो गया ये ट्रांसफर, ये डॉट डॉट डॉट, ये जब 0 पे पहुंचेगा तो लास्ट वाला डेटा ट्रांसफर. तो अगर मैंने ये किया कि मेरी काउंट वैल्यू जब 0 होती है, यू स्टॉप डीएमए ट्रांसफर. सो फॉर दैट आपको ये जो बिट है ना, टीसीएस वाला बिट, इसको आपको 1 रखना पड़ता है. ये जब 1 होगा दैट इज मीन्स स्टॉप डीएमए ऑन टर्मिनल काउंट. टर्मिनल काउंट का मतलब होता है कि काउंट जब 0 हो जाता है. तो आपने जो काउंट का जो रजिस्टर देखा है 14 बिट का, so that is 14 bit is used to set the count, and that count will goes on decreasing and it will reach to 0, and when it reaches to 0, that is a terminal count, and when you achieve the terminal count that is 0, then your DMA will stop. तो उसके लिए आपका ये बिट आपको अगर 1 रखना है. ओके, सो आपने ये वाला भी कर दिया.
अभी फोर्थ वाला extended or normal write operation. So for extended and normal operation, can you see here this bit, that is EW, extended write selection, normal write selection. अगर मैं normal write transfer कर रहा हूँ तो this bit will be 0, and if it is extended, that means more than the write operation, अगर उसके बाद भी अगर मुझे कुछ और भी write करना है, then that bit will be 1. So that is called as extended write selection, and if अगर that bit is 0, then it is called as a normal write selection. Okay, then yes, then next lecture कितने बजे है next lecture? सर 110. हाँ 110. ओके ठीक है, आई विल टेक मोर 5 minutes. ये हो गया फोर्थ वाला. ये फिफ्थ वाला देखो, ऑटो रीलोडिंग ऑफ चैनल 2, ऑटो रीलोडिंग ऑफ चैनल 2, उसके लिए कौन हु इज टेकिंग केयर? उसके लिए ये वाला बिट, लास्ट वाला बिट, AL, that is enable auto reload, enable auto reload. ओके, एंड अगर ये 0 है तो दिस विल डिसेबल ऑटो रीलोड. तो ये जो लास्ट वाला बिट है ना, आई विल एक्सप्लेन यू इन जस्ट 2 minutes. ओके, गिव मी 2 minutes, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट AL. ओके, दिस इज enable auto reload और disable auto reload. ये सब फंक्शंस करने के लिए 1 2 3 4 5 वी हैव अ मोड सेट रजिस्टर, वी हैव अ मोड सेट रजिस्टर. अभी लास्ट वाला जो हमने देखा था वो क्या था? स्टेटस रजिस्टर. आपने क्या लिखा? स्टेटस रजिस्टर कैन बी रीड टू नो द टर्मिनल काउंट स्टेटस ऑफ द चैनल, टू नो द टर्मिनल काउंट स्टेटस ऑफ द चैनल. तो उसके लिए हम देखेंगे ये नीचे वाला, यस ये वाला. so this is the format of status register of 8257. okay, of 8257. पहले वाला देखो क्या बता रहा है, TC0, चैनल 0 हैज रीच टर्मिनल काउंट. ये अगर ये देखो ये स्टेटस है, मैं ये लिख नहीं पाऊंगा इस पे, इसमें मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा, ये सिर्फ मैं रीड कर पाऊंगा क्योंकि ये स्टेटस रजिस्टर है, ये स्टेटस बताता है 8257 का. तो अगर ये बिट 1 है, इसका मतलब आपका चैनल 0 रीच टू टर्मिनल काउंट. अगर ये TC1 अगर 1 है, इसका मतलब चैनल 1 हैज रीच टू द टर्मिनल काउंट. ये बिट फॉर 2 फॉर 3. अब ये लास्ट वाला जो दैट इज इंपॉर्टेंट, that is UP. And what is UP? UP is update the flag. UP stands for update the flag. UP means update the flag. So please write down somewhere, note में लिखो, status register of 8257 का ये जो लास्ट वाला जो बीट है ना, all बीट ये बाकी के 3 बीट 0 0, ये फोर्थ वाला जो बीट है ना, ये वाला, that is important, that is UP. So write down all of you. Bit B4 of the status register is called, bit B4 of the status register is called update flag, and a 1 in this bit position indicates, that the channel 2, आपको भी ये अंडरलाइन करना है, indicates के बाद वाला, and 1 in this bit position indicates that the channel 2 register, has been reloaded from channel 3 register. Channel 2 register has been reloaded from channel 3 registers in the auto load mode of operation. तो आपका अगेन आई एम गोइंग, मैं ऊपर जा रहा हूं. ये जो है ना, अगर आपने ये बिट 1 करके रखा है, इसका मतलब अनेबल ऑटो रीलोड. तो अनेबल ऑटो रीलोड का मतलब क्या है? वही है कि आपका जब चैनल 2 का जो रजिस्टर है दैट इज रीलोडेड, वो फिर से रीलोड होता है बाय फ्रॉम द चैनल 3 रजिस्टर, ओके. तो चैनल 2 का जो रजिस्टर है, दैट मीन्स चैनल 2 का मीन्स रजिस्टर मीन्स एड्रेस रजिस्टर एंड काउंट रजिस्टर. तो जब कभी दैट काउंट रजिस्टर और एड्रेस रजिस्टर when that function is done, then that channel 2 is again reloaded from the channel 3. चैनल 3 में जो भी कुछ एड्रेस रजिस्टर में या फिर काउंट रजिस्टर में
वो चैनल 2 में लोड हो जाता है ऑटोमेटिकली। और वो कब होता है? जब आप ये बीट 1 करते हो। कौन सा बीट? ये वाला बीट। और ये बीट अगर 1 हो गया, इसका मतलब आप जब स्टेटस रजिस्टर देखोगे तो स्टेटस रजिस्टर में ये जो बीट है वो 1 रहेगा। तो 1 का मतलब ये बताता है कि चैनल 2 इज रीलोडेड फ्रॉम चैनल 3। चैनल 2 इज रीलोडेड फ्रॉम चैनल 3। दैट इज द मीन। So this is all about the different modes: the address register, the count register, the mode set register, the status register of 8257. We have seen the pin diagram, the functional block diagram, the main diagram where you have seen the interfacing of DMA with 8086. So I have explained each and everything. Now as far as this test 2 is concerned, only 2 topics are left. एक वाला जो टॉपिक है वो DAC 0808 का और दूसरा वाला है 8087 का। उसके रिलेटेड मैंने स्टडी मटेरियल भेजा है। जस्ट गो थ्रू दैट एंड ऑल्सो सी द सिलेबस विच इज कमिंग इन द टेस्ट 2। दूसरी बात, इन योर फाइनल एग्जाम, इन योर फाइनल एग्जाम ब्लॉक डायग्राम ये सब जो है, ये सब यू हैव टू अंडरस्टैंड, बट दीज कैन बी टेकन एज ए MCQ क्वेश्चन ऑल्सो। सो यू शुड हैव, मैंने जो पहले भी बताया था, यू शुड हैव द माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। कुछ भी अगर छूट गया और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो यू वोंट बी एबल टू गिव द आंसर। एंड सेकंड थिंग इज दैट the options will be very near to each other. That will give confusion to you, which one is the right option, which is the most right option. Okay, so for that you have to study very keenly with minute observations. Okay, so with this I will stop here. If you have any questions you can ask. And for the 2 remaining this one, from tomorrow onwards you will be having the test 2, scheduled. My subject exam is on 29th. So before that I will be sending my 2 video recordings to explain you about the DAC and the 8087. Just go through that and try to understand the concept. Otherwise I have already shared you the study material yesterday only. तो आप देख लेना, PPTs and notes में मैंने सब दिया है. ओके, परमेश्वर मैडम ने अटेंडेंस ले लिया? मनीष? यस मैम, सो मैम ने अटेंडेंस ले लिया। हाँ ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम. So if you have any questions, any doubt, anything related with the exam, you can just ping me. You can just mail me, or you must be having my WhatsApp number. तो आप कुछ भी डाउट रहे तो जस्ट you can just ask me. Okay. And related for today's lecture, अगर आपको कुछ डाउट है तो you can stay, others can leave. Thank you, sir. Okay. All the best for your exam. Do well. Study well. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Bye bye. Thank you, sir.